Done some revision, I hope, right, Sarah? Yes, sir. Okay, fine. Please write a question. The first ionization enthalpy, the delta, first delta H, I should write. The first ionization enthalpy of third period elements sodium, magnesium, and silicon are 496, 737 and 786 kilojoule per mole. Predict whether the first ionization enthalpy value for aluminium will be more close to 575 kilojoule per mole or 760 kilojoule per mole. Or 760 kilojoule per mole. Ye 496. Okay, just a second. This is 496. Now, this question is not from any. It's just from NCERT, and it is one of the very good questions in NCERT. Most of the questions in NCERT, at least for chemistry, it is good. This is one of the best ones, which allows your brain to work. It requires your brain to work. And also it requires you to scratch your head. Let me know once you're done writing this question, Alia and Sarah. Done, sir. Done? Okay, fine. Now, first, what we are going to write? We are going to write the elements, whatever the given information is. So we have sodium, we have magnesium, and we have silicon. Sodium they have given as 496. Magnesium they have given as 737. And for silicon, they have given as 786 kilojoules per mole, right? Now you guys tell me. You compare these values 496, 737, and 786, and tell me which of the following lies between 757, 575 and 760. Which values lies between these two? Tell me, guys. No, I'm asking. We have three values here for sodium, magnesium, and silicon. Which of these following value lie between 575 and 760? Which of the following lies? 737, right? That is Mg. Correct? Yes, now, sir. Please see this. These all the information that they have given, they're not very necessary. The most important information is Mg's information. Okay. That means we have Mg and we have to compare aluminium. We have to compare Mg and what? Mg and aluminium. Okay. Now, why we have to compare Mg and aluminium? Because let us suppose they are saying that it is near to 575 or it is going to be near to 760. Now, if the aluminiums, please listen to this very carefully. Don't write anything. Leave your pen aside and focus on the screen only and listen to my voice. If aluminium's ionization enthalpy is 575, it is what? If it is 575, then it is greater than aluminium or less than aluminium? It will be less than aluminium, right? Yes or no? Correct? Yes, sir. Alliance, right? Now,
and if it is 760, then it is going to be greater than aluminium. Aluminium's ionization enthalpy will be greater than magnesium. Correct? Yes, sir. That means this question is not asking all of these things. They are just asking you to compare the ionization enthalpy of magnesium and aluminium. So we are going to do just that. एक तो सवाल लिखा होता है, and there is another thing which they are trying to ask. ठीक है? So they are only asking you what is the, you have to compare the ionization enthalpy of magnesium and that of aluminium. Now please see here, how are we going to look at this? Magnesium's atomic number is 12, aluminium's atomic number is 30. If I want to write the electronic configuration, then I am going to write it like this: 1s2, 2s2, 2p6, and 3s. 3s how much? 3s2, right? For aluminium, it will be 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, and 3p1. Sara and Ali, is this clear? Yes or no? Please keep your mic on and Yes, tell sir. me yes or no. Yes, sir. Okay. Now tell me, what is easier to remove the electron from? Is it easier to remove the electron from S subshell or P subshell? P. P or S? S. Where it is easier, Sara? Easier. P. P. Sara, why are you saying S? Tell me. सारा आप एस बताइए क्यों कह रही हैं? सारा का माइक ऑफ हो जाता है, सारा हमसे कोई Because the capacity is. सॉरी व्हाट? Because of the capacity. देखिए, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आप डिस्टेंस याद रखेंगे, इतनी दफा आपको बताया हमने। आपको ये याद रखना है न्यूक्लियस से कौन ज्यादा नजदीक है, एस ज्यादा नजदीक है, पी ज्यादा नजदीक है? ये सारा विच इज मोर नियर, एस और पी? P. पी इज मोर नियर। S. सारा आप S. पढ़ ही S. नहीं। SPD. नहीं, दो तो ऑप्शन है, ट्रू और फॉल्स में। ये देखिए सारा, आई डोंट नो, आप पढ़ नहीं रही हैं, आप लोग को, आपको चीजें समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। ठीक है, आप बिल्कुल उल्टा जवाब देती है सारा चीज का। अभी तक थोड़ा या तो सोच के आप बोल लें, है ना सारा? सो if S is nearer, so the removal of electron will be easy or difficult? Difficult. Difficult, na? So where it is easy to remove from? P. P. If it is easier to remove from P, that means it is easier to remove electron from aluminium. That means the ionization enthalpy of aluminium will be less than या greater than mg. क्या होगा? Ionization enthalpy less होगा या more होगा सारा? If it is easier. 1 minute, sir. Okay. Can you repeat the question once again? If the removal of electron is easier from aluminium, then ionization enthalpy will be less or more? More. Sara? More. Can you explain it? I'm saying, Sara, can you explain it? Why? Because it is more close to 570. वो हम पूछे नहीं पे, पता नहीं आप सवाल इस आपको मतलब या तो आपने पढ़ा है, समझ ही नहीं आ रहा आपको चल क्या रहा है बिल्कुल, या तो ये हो सकता है सारा, है ना? आपको समझ में चल क्या रहा है, मतलब हो क्या रहा है यहाँ पे। एंथैल्पी, व्हेन आई से आयनाइजेशन एंथैल्पी, तब क्या मतलब होता है? व्हेन आई से इट इज इजियर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, तब क्या मतलब? ये सारी चीजें समझ में नहीं आ रही, या तो ये हो रहा है, मतलब यही हो रहा है, हमको लगता है यही हो रहा है। तो आई डोंट नो व्हाट टू डू। ठीक है, बिकॉज आई मीन आप पता नहीं आप आंसर किस तरह से कर रही हैं, हमको समझ ही नहीं आ रहा है।
I don't know, क्या करें अब हम इसमें। आप थोड़ा सा सोचिए सारा ना, इफ इट इज, कीप योर माइक ऑन सारा एटलीस्ट। Easier to remove electron. थोड़ा सोचिए, न्यूक्लियस है, बोलिए बोलिए आप, ठीक है, चीजों को बोलिए, समझने की कोशिश कीजिए चीजों को। न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी लगेगी या नहीं लगेगी? अगर एनर्जी लगेगी, अगर आसान है तो ज्यादा एनर्जी लगेगी या कम एनर्जी लगेगी, वही आयनाइजेशन। अब बताइए, सोचिए, एक एक चीज सोच के बताइए। एनर्जी लगेगी। एनर्जी लगेगी, कम लगेगी या ज्यादा लगेगी? ज्यादा। अच्छा, अगर डिफिकल्ट होता तो कम लगती? अगर अगर वो न्यूक्लियस के पास में है तो वो छोड़ दीजिए ना, डिफिकल्ट सारा वो कहानी खत्म हो चुकी, उसको रहने दीजिए। अब देखिए, हम कोई ना ऐसा सवाल नहीं कि पीछे जाना पड़ेगा आपको, ठीक है? आपको यहाँ से अब आगे ही जाना। अब बताइए, इजियर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन और डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, कहाँ ज्यादा एनर्जी लगेगी? ए केस में या बी केस में? बी के। तो जब इजियर बोल रहे हैं तो कम एनर्जी लगेगी, आपको बोलना चाहिए ना। यस। अब बताइए, हम इसमें क्या समझाएं आपको? इधर उधर भटकते रहता है क्या दिमाग आपका सारा? मतलब दूसरे दूसरे चीजों में, इधर उधर, आसपास कुछ हो गया तो तुरंत आपका इधर नजर चला गया, ऐसा होता है आपके साथ? नो सर। जी सारा, यस और नो, टेल मी। नो सर। नहीं होता है, पक्की बात? या। अच्छा, ठीक है। तो आप चीजों को बहुत ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं। लाइक हाउ डू यू अंडरस्टैंड थिंग्स, टेल मी ना। वही हम समझना चाहते हैं, बिकॉज आई थिंक दिस इज मतलब प्रेटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। जब आपको समझ में आ गया, इफ इट इज इजियर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, देन ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू टेक लेस एनर्जी, राइट? है ना सारा? तो या। आप ट्राई देखिए जरा कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है आपको, ठीक है? सो वी आर गोइंग टू से दैट एल्यूमिनियम will have lower ionization enthalpy than magnesium. तो मैग्नीशियम का जो है उससे क्या होगा, ठीक है, उससे कम होगा। तो बताइए व्हाट विल बी द वैल्यू, 575 या 760 सारा? 570। ओके, फाइन, ठीक है। सारा, आर यू डन राइटिंग? यस सर। यू आर डन राइटिंग? या। नहीं, ठीक है, आप हम गलती समझ गए। हम जब एक्सप्लेन करते हैं, आप चीजों को लिखते हैं उस वक्त, राइट सारा? नो सर। नहीं, कैसे फिर तो कैसे हो सकता है ये कि आपने सारा चीज लिख लिया अभी तक? बिकॉज आई वाज एक्सप्लेनिंग एट दिस पॉइंट ना। No, after you wrote the MG and this stuff, हाँ ठीक है, then I देन did. आई डिड नॉट आस्क यू टू राइट थिंग्स डाउन। ठीक है, चलिए, ये तो हमको समझ में आ गई, एक चीज तो समझ में आई कि आप लिखने लगती हैं चीजों को बहुत ज्यादा जल्दी, ठीक है। वो पता चल जाएगा ना, थोड़ी देर में पता चल जाएगा आप लिखते हैं या नहीं लिखते। डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, मार्टिन, व्हाई आर यू लेट? अच्छा, वेट अ सेकंड मार्टिन, आई कैनॉट हियर यू एट ऑल। वेट अ सेकंड, लेट मी ब्रिंग माय ईयरफोन्स। Alia, you understood the previous one, the question? Yes, sir. Okay, okay.
Also, Arya, one more thing. How is your log, anti-log, these part? Sorry. How is your log, anti-log? I mean, in calculations. It's okay-ish. Okay, मतलब clarity नहीं है उतनी log के बारे में. When I do the questions, I get the clarity. Like for now, I'm not doing those kind of questions, so I'm perfect. अच्छा, but once you clarity है आपको ना, अभी ऐसे Yes. ठीक है, fine. Actually, like 11th और 12th start के लिए basic maths वगैरह के लिए ना, I was taking some classes. Okay, so Yes, sir, I thought that. अच्छा, आप उसमें आ रही हैं? No, sir. I'm actually अपने आप से मैंने कर लिया था basic maths integration. अच्छा, नहीं, बेसिक मैथ्स तो वो तो फिजिक्स वाले पढ़ाते हैं. बेसिक मैथ्स, वो बेसिक मैथ्स नहीं, इन द सेंस कि जो केमिस्ट्री में खास तौर से यूज होता है ना, हाउ टू डू सम फास्ट कैलकुलेशंस एंड बिल्कुल बेसिक मैथ्स. ठीक. एंड अब नेक्स्ट जो था वो लॉग और एंटी लॉग के बारे में 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए था. ठीक. वंस यू हैव डन दैट, इट्स फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम. आई होप यू नो कि बेसिक मैथ्स केमिस्ट्री नहीं, फिजिक्स टीचर्स पढ़ाते हैं, है ना. चलिए. Okay, Harsha is also here now. Okay. So now the topic, electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy, delta H in the subscript Eg, and we are also going to write this sometime as Ege. What is electron gain enthalpy? Electron gain enthalpy. In this, what happens? We have an atom A. This will be neutral, isolated, gaseous atom. Okay, it is going to be neutral, isolated, and gaseous atom. And in this, we are going to add an electron. In this, we are going to add an electron. And it is going to get a negative charge. Okay, it is going to get a negative charge. Now, let us understand what is going to happen when we do this type of reaction. When we add an electron, then should energy be required or should energy be released? Let us understand this also. So let us take a proton, a nucleus with 11 protons. So obviously this is sodium atom. And in sodium atom, what we are doing, we are going to add some electrons. Okay, so we are going to add, in the first shell, there will be 2 electrons. Now in the second shell, there will be large number of electrons. So I have to make it a bit big. So there will be how many electrons? 8 electrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. 7 and 8, right? And then we are going to put up the third shell. In this, we are going to have 1 electron. Okay. Now, I will just copy this and paste it here. You don't need to write anything right now. आप लोगों को सिर्फ देखना है अभी, ठीक है? You want try to understand this part. Now, what is happening here is we are having 11 protons and 11 electrons in the first case. And in this case, we can say that 11 protons are there, right? So 11 protons are they are all inside the nucleus. So there is an attraction between these two. There's attraction between these two. There is attraction between these two. And we can in total say that there are 11 attractions. Okay, that means there is attraction between 11 unit of charges. Correct? Alia, Martin, Sarah, and Harsha. All of you understand this? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Correct? Now, when we are going to add one more electron, then you can say that now we have 12 attractions. Correct? Yes or no? Tell me. Yes, sir. Right? Now, tell me, attraction is good or bad? For the stability, attraction is good or bad? क्या ख्याल है हर्षा, सारा, मार्टिन, अनालिया? Attraction is good or bad? Oh, no idea. Oh my God. I think in the first lecture only I gave you some principle about thinking regarding stability, right? I think we have talked about stability, right? Yes or no?
Yes, sir. So in this, we have said that repulsion agar zyada hoga, then what is going to happen? Unstable. And attraction agar zyada hoga, to it's going to be stable, right? Yes, sir. है ना? So if there is more attraction, then in that case, what is going to happen? Attraction जहाँ पे भी ज़्यादा होगा, that means it is, we cannot say it is more stable, but energy will be released when there are attractions. When we are going from less attraction to more attraction, then energy will be released. What is going to happen? Energy will be released because attraction is a good thing. Because attraction is a good thing. In terms of stability, attraction is a good thing. So what we are going to write here, generally speaking, generally, energy is released on addition of electron to an atom. On addition of electron to an atom. Now, next point is, therefore, delta Heg, energy release हो रहा है, that means the final energy will be less. That is why delta Heg is generally negative. Is generally negative. Now, please write this down. Let me know once you're done. Now, okay, please see here. Let us suppose we are taking a case of helium atom. So in helium atom, we are going to have proton, and this will be two protons, two positive charges, and it is going to have only one shell like this. If you are going to add an electron here, then what is going to happen? The two positive charge will be as it is, the protons in the nucleus. The electrons will be as it is, because in the first shell you cannot add more than two electrons. It is completely stable. In order to add an electron, the atom has to put efforts and it has to bring up a new complete shell, and then the incoming electron will be added. Now, this requires a lot of energy because you are adding an electron in a completely new shell. You are adding an electron in a completely stable molecule, completely stable atom. This requires a lot of energy. Why? Because you are adding a new shell. You are making a new shell and then adding the electron. So you are going to write. Next point is regarding the noble gases. Next point is regarding what? Noble gases. Please write with me. Noble gases have high positive value of delta Heg. Okay, it has high as well as it is positive. That means it is endothermic. Please write here. That is energy is required for addition of electron
for addition of electron due to stable electronic configuration, and also the incoming electron is added to a new orbit requiring high energy, ठीक है। like इसमें आपको बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन हो सकता है, आप थोड़ा सोचिएगा इन सब चीजों के बारे में तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो सकता है कि इतना ज्यादा पॉजिटिव क्यों हो जाता है। इसमें भी तो अट्रैक्शंस बढ़ रहे हैं, बट प्लीज अंडरस्टैंड दैट see these two protons, the two positive charge, वो सोच रहा था कि हमारे पास जो इन्फ्लुएंस का लेवल है ना, we have to just put influence till here, है ना, इस एरिया तक हमको इन्फ्लुएंस रखना है अपना पॉजिटिव चार्ज, इससे ज्यादा दूर हमको जाना नहीं है, राइट। बट व्हेन यू ऐड अ न्यू इलेक्ट्रॉन इन अ न्यू शेल, अब इसको क्या करना पड़ेगा, अब इसको अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना पड़ेगा, है ना। एरिया इसने बढ़ाया, इनमें भी जो पॉजिटिव चार्ज पहले लग रहा था, वट एवर पॉजिटिव चार्ज दीज वी आर फीलिंग, दैट इंटेंसिटी विल आल्सो लोअर डाउन, that intensity will also be lower down. That is why it requires what? Energy. That is why it is completely unstable thing to do, to add any electron in a noble gas, Then everyone, yes or no, please tell me. Yes, sir. Yes, Okay. Right, next, the definition of electron gain enthalpy. Okay, so please write. The energy released when an electron is added to neutral isolated gaseous atom to form anion is known as electron gain enthalpy. Now, if you remember the first class when we started talking about the properties that we are going to discuss, then in that we say that ionization enthalpy was mainly studied for metals, electron gain enthalpy was mainly studied for non-metals. So you're in the back of your head, you are going to keep this notion in your mind. Electron gain enthalpy was basically studied for non-metals only, because non-metals have a tendency to take up electrons. Okay, in back of your head, you should also remember that electron gain enthalpy is mainly for non-metals. Next, you are going to write factors affecting electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy. Now, these are the factors. Whenever we are going to compare electron gain enthalpy, then you are going to come back to these factors. Okay. Now, you will write here first of all a point. Delta HEG gives an idea about how easily an electron can be added to an atom. Okay. Now, write the first point. Effective nuclear charge. Effective nuclear charge. Now, when you talk about effective nuclear charge, so tell me that if we are having high effective nuclear charge, if the Z effective is higher, then it will attract the last electron more, yes or no?
आप अट्रैक्शन सोचे चलिए बस इसमें, है ना। अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा या कम? टेल मी ऑल ऑफ यू। इफ यू हैव मोर पॉजिटिव चार्ज then attraction will be more or less. Alia, Martin, Sara and Harsha? More. More. More, right? It is going to be more. So you are going to write Z effective is high, meaning more attraction for incoming electron. For incoming electron. Okay. Therefore, what is going to happen? Therefore, delta HEG value will be more negative. More negative का आप समझ लीजिए जरा. Delta HEG more negative, that means more energy is released. ठीक है. When I say more negative, negative का क्या मतलब होता है? Energy release. More positive, positive का क्या मतलब है? Energy required. When I say more negative, then you are in your head you should be going more energy is released. More energy is released. More negative. Got this, guys? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. Okay. इसमें एक और पॉइंट लिख लेते हैं. आप लोग जितना भी आप इसमें देखिए डाउट नहीं आना चाहिए. आप हर तरीके से समझ लीजिए. दी मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड समझते हैं. Magnitude means the number without the sign. The number without the sign. The magnitude of delta HEG increases on increase in Z effective. Magnitude बढ़ेगा, सिर्फ नंबर बढ़ेगा. कैसे बढ़ेगा? जब Z effective बढ़ेगा. At the second point, size of atom. Now tell me, if the size of atom is larger, if the size of atom is larger, then the nucleus can attract in the last electron जो है, then nucleus can attract it more effectively. When can nucleus attract the last electron more effectively? When the size is larger, when the size is smaller. कहाँ पे attraction ज़्यादा होगा? When the size is smaller. When the size is smaller, right? So please you will write next. Size increases, तो क्या होगा? Attraction will decrease because दूर हो गए. Therefore, attraction कम हुआ तो release in energy will be less. Release in energy is going to be less, है ना. और release in energy को क्या बोलते हैं? Less negative हो जाएगा ना. कम हो रहा है तो less negative. So please write delta HEG will be less negative. नेगेटिव तो होगा लेकिन कम होगा. वैल्यू जो होगी वो मैग्नीट्यूड जो होगा कम होगा. लेस नेगेटिव ऑन इंक्रीज इन साइज. ठीक है. राइट नेक्स्ट. थर्ड पॉइंट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है. तो राइट नेक्स्ट. स्टेबल electronic configuration. Stable electronic configuration will have less negative delta HEG because the tendency to add electron will be less. Okay. When you are having, please understand this. Please leave your pen aside and understand the electronic configuration very easily. When you have stable electronic configuration, what does it mean? For example, noble gas stable, half filled stable, fully filled is stable. So when you have stable electronic configuration, then the atom, it does not want any more electron. It is stable. It is very happy. It is very happy. It does not want any more electron. But if you give it electron, if you are going to give it electron, then you will see, okay, fine, if they have given me electron, so I'm not very much happy. है ना. तो happiness का level बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो जाएगा.
In the previous cases, what was happening? If you don't have stable electronic configuration, and if you're giving electrons to the atom, then atom says, oh my God, new attraction, new attraction, new attraction, new attraction. So they will be very happy. But then when they are already very happy, ये समझ लीजिए ना, आप जितना ही पैसा दे दे, तो अमीर आदमी को जितना पैसा भी दे दे, कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, है ना? लेकिन वही 100 रुपए अगर आप किसी गरीब को देंगे तो बहुत ज्यादा खुश, ठीक है? सेम थिंग, जो स्टेबल है उसको आप जितना पैसा दे दो उसमें बहुत ज्यादा खुशी नहीं होगी. दैट मींस द हैप्पीनेस विल बी देयर. इसको फ्री का पैसा नहीं चाहिए, फ्री का पैसा सबको चाहिए, लेकिन वो लेवल नहीं होगा. सो इट विल बी लेस नेगेटिव, तो लेस हैप्पी, है ना? सो लेस एनर्जी विल बी रिलीज. लेस नेगेटिव का मतलब लेस एनर्जी विल बी रिलीज. All of you got this? Yes, no, please tell me. Alia, Martin, Sarah, and Harsha. Yes. Done writing? Yes or no, please tell me. Yes. Okay, right, next. अब देखते हैं ट्रेंड्स. क्या देखते हैं? ट्रेंड्स. क्या ट्रेंड्स? रिलायंस ट्रेंड्स. पीरियोडिक ट्रेंड्स. क्या देखते हैं? पीरियोडिक ट्रेंड्स, है ना? प्लीज राइट हियर. In general, delta HEG becomes more negative as we move left to right along the period. Why? Because Z effective increases left to right along period. Got this? Yes or no, please tell me. है ना? हाँ सही है. Z effective ही तो ये करेगा यहाँ पे, बिकॉज साइज तो कुछ नहीं होता जनरली. मतलब Z साइज भी क्या होता है? साइज भी और छोटा होता है. अब और लिख सकते हैं यहाँ पे, बिकॉज एंड लिख दी, एंड साइज डिक्रीजेस. दोनों के दोनों, that Z effective is increasing, so that is also favorable for release of more energy. Size is decreasing, that is also favorable for more release of energy. That means more negative, है ना? So when we move left to right along a period, then the release of energy is high and the delta HEG becomes more negative. Now right, next. On moving top to bottom in a group, delta HEG becomes less negative, as the size increases. टॉप टू बॉटम जाएंगे अगर ग्रुप में, पहले फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, तो साइज इज इंक्रीजिंग. दैट इज व्हाई द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इज वेरी फार अवे एंड अट्रैक्शन उतना ज्यादा नहीं होगा. डन एवरीवन? यस नो प्लीज टेल मी. सबने लिख लिया? चलिए, राइट, नेक्स्ट. रिमार्क्स. Okay, now first point ये बताइए. See, in our periodic table, here we don't write anything now. Here we have the S block element, here we have the D block elements, and here we have the P block elements. P block element में तो आपके पास last वाला जो column है, that is going to be what? Noble gases. So noble gases को तो consider नहीं करेंगे because noble gas have positive electron gain enthalpy. Now tell me, on moving left to right, what happens? Delta HEG becomes less negative, more negative? More negative. More negative. तो ये जो ये 18th है, तो 17th वाले it is going to be what? Most electron, most what? सबसे ज्यादा हाई होगा ना इसमें. It will be most negative, correct? Yes or no? Please tell me, guys. Yes, sir. Make sense, है ना? वही है. और 17th वाले को क्या बोलते हैं? Halogens, right? Halogens have
the most negative electron gain enthalpy in their respective period. In their respective period, है ना? अगर हम पीरियड 1 तो नहीं, पीरियड 1 में तो कोई भी नहीं होता, पीरियड 2 में होंगे, पीरियड 2 में कौन सबसे ज्यादा? तो फ्लोरीन। पीरियड 3 में विच इज मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? क्लोरीन। देन 4th में ब्रोमीन, है ना? 5th में आयोडीन, and then astatine and so on. Fine. Now next point you are going to write. But if you are going to look at the electron gain enthalpy of fluorine, chlorine, bromine, and iodine, then tell me which is going to have the highest? Fluorine, chlorine, bromine, or iodine में from top to bottom what happens? Electron gain enthalpy decreases. तो सबसे ज्यादा किसका होगा? फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, है ना? नीचे कम होता जाता है ना, डिक्रीज करता जाता है, लेस नेगेटिव होता जाता है. दैट इज व्हाई फ्लोरीन शुड हैव द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बट ऐसा होता नहीं. क्यों नहीं होता है समझते हैं उसको. यू विल राइट हियर डेल्टा HEG of fluorine versus chlorine. Fluorine versus chlorine. Now, इसमें आप लोगों ने एक मीम देखा है, सफरिंग विथ सक्सेस. देखा आपने? नहीं देखा है? देखा तो होगा. नहीं देखा है? बोलो भाई, नहीं देखा है? सफरिंग फ्रॉम सक्सेस और सफरिंग विथ सक्सेस नहीं देखा? ओ माय गॉड, दिस कांट हैपन. हाँ हर्षा, दिस वन Yes, हैव sir. सीन दिस? देखा है ना? तो यही हो जाता है किसके साथ? फ्लोरीन के साथ यही हो गया. क्या हुआ फ्लोरीन के साथ? कैसे? नाउ what was the reason in a group the electron gain enthalpy it is less negative as we go down the group? Why? Because क्या लिखा है रीजन हमने? Because sorry, Z effective decreases. what once again I cannot hear you. So I said Z effective decreases. नहीं ना, Z effective तो नहीं लिखा है हमने, Size. और साइज लिखा है ना. दूसरी चीज ये ध्यान रखिएगा प्लीज हर्षा, आई थिंक व्हेन वी स्टार्टेड दिस तो Z effective कहाँ गया? From top to bottom in a group Z effective is Constant. कांस्टेंट. ठीक है, ये हमने दिखाया भी था. ठीक है, लिथियम को अगर आप छोड़ दें यहाँ पे, बट सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम सबका कितना Z इफेक्टिव? 2.20. ठीक है, Okay. तो Z इफेक्टिव डज नॉट चेंज इन अ ग्रुप. क्या होता है? साइज बढ़ता है. ठीक है, प्लीज रिमेंबर that means fluorine was very happy that it is going to have the most negative electron gain enthalpy because of small size. Correct guys? Yes or no, please tell me. है ना? Size छोटा होता, then the incoming electron will be very near to the nucleus, and when the incoming electron is very near to the nucleus there will be high attraction. High attraction means more release of energy. More release of energy means more negative. But due to the same small size, it becomes very much packed and electronic repulsion increases. Small size होगा तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन की इनकमिंग के लिए नहीं ना, all the electrons which are present there, they will also feel repulsions, right? So the same small size which was to be responsible for higher negative electron gain enthalpy, it also becomes a reason for it becomes a curse. And suffering from success, suffering from small size. What happens? Please write now. Please write. The incoming electron gets to the 2p subshell
of fluorine. फ्लोरीन में ओ यू होता है या ये क्यों जाता है, यू ओ होता है. Fluorine, which is very compact, and small in size, leading to electronic repulsions, and hence less energy is released. But in chlorine, the incoming electron enters 3p subshell, which is larger in size. Therefore, which is larger in size. Therefore, what we are going to write, therefore, chlorine has more negative delta Heg than fluorine. Done, everyone? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Write a question. Give me a second. Arrange the following electronic configuration in order of increasing negative electron gain enthalpy. सबसे ज्यादा सबसे कम नेगेटिव कौन होगा, उसके बाद एंड सो. ठीक है, ट्राई कीजिए जरा. दिस इज, लेट अस सपोज ये आप, ये 1 2 3 तो दिया हुआ ना, तो 1 2 3 में आप अरेंज कर लेंगे. चलो प्लीज राइट दिस डाउन. इसमें बस आप एक चेंज कर लीजिए. ये sp5 नहीं है, दिस इज 3p5. ओके, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5.
Any idea what happened? All of you are stuck. Harsha, Sarah, Martin, and Nalia. Tell me, guys. Harsha, हो रहा है या फिर you are stuck? Actually, someone is trying. Alia is trying. Fine. So take 1 more minute, I think. ज़्यादा time आपको नहीं लगना चाहिए. Take 1 more minute. Okay, Harsha has got an answer. No, Harsha, I don't know why. ठीक है, देखते हैं. 30 more seconds and we are going to discuss. Don't worry. आप देखिए, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ ना, उससे आप लोग मत खेलिए. आप यहाँ पे ऐड, आई मीन ये लिख लीजिए व्हाट इज द एलिमेंट इटसेल्फ. ठीक है, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा. राइट द एलिमेंट्स, देन यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर. एटॉमिक नंबर पता चल जाएगा आप लोगों को, राइट? एंड फ्रॉम द एटॉमिक नंबर यू कैन इजीली डिटेक्ट. ठीक है, चलिए प्लीज सी हियर. This is what is the atomic number here? 10 plus 7, 17 means chlorine, right? Correct? Yes or no? Please tell me, guys. Yes, sir. Now this is what? 5 plus 9, fluorine. Correct? Yeah. Okay. Now what is this one? 7. 7 is what? Nitrogen. Yeah. And what about this one? 1s2, 2s2, 2p6. This is 10 and 11. Sodium. Right? चलिए. अब I hope you can see this very easily. सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा यहाँ पे बताएं? Group 17 is largest. Group 17 में chlorine is largest, right? Chlorine will be having the highest negative electron gain enthalpy. Okay. So I am talking about the negative electron gain enthalpy. सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? Chlorine हो जाएगा. After that, obviously fluorine, and after that, sodium. तो S block में it is very much towards the लेफ्ट साइड. राइट साइड वालों को ज्यादा होता है, नाइट्रोजन हो जाएगा. और उसके बाद लास्ट में क्या हो जाएगा? सोडियम. गॉट दिस? प्लीज टेल मी. Sir, did give me the answer. Same. Sorry, what's you got the same answer? Yeah, I sent you in the chat. 1, 2, and then 3, and then 4. सही. हाँ, very good. Yes, that is correct. 1 का सबसे ज्यादा, 2 का उसके बाद, 3 का, and then 4 का. Alia, Sarah, and Harsha got this? Yes, sir. Yes, sir. I have a question. Yeah, tell me. Sir, I got the same answer, but I used different approach. So can you just tell me if I'm yeah, right fine. or not? So Yeah. like chlorine में P5 है, right? So it's not completely filled. और फिर हमारे पास जो फोर्थ है उसमें 3s. So 3s में 2 होना चाहिए, like 2, like it's half filled. So वो लास्ट में होगा, and फिर उससे पहले 3p. So kind of मैंने ऐसे किया था. नहीं. अब अगर उस तरीके से जाएंगे ना, तो प्लीज सी हियर. सो प्रॉब्लम ये होगी, देखिए जरा. इन द रिस्पेक्टिव पीरियड. या तो आप इनको ऐसे कर सकते हैं, आप या तो पीरियड्स में डिवाइड कर लें. ओके, सो 1 and 4 आर इन द सेम पीरियड. सही है ना? थर्ड पीरियड एंड थर्ड पीरियड, राइट? मैक्सिमम पीक है. ठीक है, 1 and 4 आर इन द सेम पीरियड. 1 और 4 में किसका ज्यादा होगा? 1 का ज्यादा होगा. हाँ या ना? Yes, or no? Please tell me. yes, Why? Why 1 का ज्यादा होगा? Because if you are going towards the stable electronic configuration ना, तो इसमें आपने एक इलेक्ट्रॉन डाला और आपको 3p6 मिल गया. That is noble gas configuration, right? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, fine. Even if you are adding 1 electron here, then still it is not as stable as what when you are adding 1 electron in the first one. ठीक है. Now
Let us compare 2 and 3. So the same thing we can apply on 2 and 3 also. Correct? Yes, sir. So we can say 2 is more than 3. अब बात आएगी इनके बारे में. Now when you are going to compare SP और P's को compare करेंगे पहले तो, है ना? So in this case we can easily, अब यहाँ पे you have to understand where these particular atoms are lying in the periodic table. If you are going towards the configuration only ना, और outermost electronic configuration का अगर सिर्फ आप बोल रहे हैं तो उसमें दिक्कत ये होगी P3 से P4, P3 से what? P4. ठीक है? Now this is half filled, this is fully filled. Correct? Yes, sir. ठीक है. Now this is going, sorry, this is not fully filled, my bad. This is partially filled, no? It's like partial fill, yes, sir. Partially filled, yeah, my bad. Now if you are having 3s1 and 3s2, 3s1 s2 को छोड़िए, s1 से s2, आप सिर्फ ये देख रहे हैं अगर. So this is half filled to It's like fully half filled. filled and fully filled. Yes, sir. ठीक है. Now this is less stable बोल सकते हैं इसको. Yes, sir. This is more stable. Yes, sir. ठीक है. So tell me which should be easier, A case or B case? A case. Like हाँ, it will be easy to नहीं add कैसे? an- it will हाँ, be हाँ. easy to add an electron. नहीं तो ये तो लेस स्टेबल हो जा रहा है ना if you are adding an electron. उस तरह से सोचिए. Oh, okay. I'm just looking. Okay. ठीक है, got it, Alia? Yes, sir. Yes, sir. It is going to be less stable. So कौन ज्यादा, Yes, sir. which is easier? B is easier. है ना? Yes, sir. So B will release. आप ये करते हैं ना, release more energy. आप ये लिखते हैं हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है. तो क्या ये सही होता? That means you are talking about what? Sodium. When you are comparing Okay. sodium and nitrogen, you are coming to a conclusion that sodium is going to release more energy. That won't be true, na? Because Okay. along a Okay, period yes, when I you're got moving, got it? Yes, I got it. तारा आपने कैसे किया था? The way you did. अच्छा, the way I did, ना? आपने इसको atom. And what about you, Harsha? आपने कैसे किया था? Over the electronic configuration. Electronic. तो उसमें दिक्कत आ जाएगी, है ना? Because see, whenever they are giving electronic, तो उसमें आपको ये भी नजर रखना है कि कौन से शेल में आप इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं, एंड सो दोस थिंग्स आल्सो. ठीक है. और अगर हम ये भी चीज देखें, या तो आप देखिए यहाँ पे ये कर सकते थे, अगर एक बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जाना है ना आपको, तो आप देखिए आप यहाँ पे सेकंड शेल में ऐड कर रहे हैं. ठीक है. एंड हियर यू आर एडिंग इलेक्ट्रॉन्स इन द थर्ड शेल, which will be easier, which will have more attraction. Tell me, second shell या third shell? Second shell. Second shell, right? So this should be easier, right? तो आप इस लिहाज से कर सकते थे. ठीक है. बट इफ यू ओनली लुक एट वन थिंग ना, कि आपने 2p3 को देख के बस लगा लिया, तो फिर वो गलती हो जाएगी वहां पे. आलिया आप देखिए, आप अगर आपने ये अप्रोच लिया होता तब ये सही हो जाता, है ना? राइट आलिया? Yes, sir. आलिया इज नॉट हियर. Yes, sir. ठीक है. Hello. तो ध्यान देंगे जरा. व्हेनेवर वी टॉक अबाउट थिंग्स ना, तो शेल को प्रायोरिटी दीजिएगा सबशेल से. सबशेल से ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलेगी? शेल को मिलेगी, है ना? बिकॉज सबशेल तो शेल के अंदर होता है, तो शेल में पहले आप डिसाइड कर ले, उसके बाद सबशेल तक जा सकते हैं. शेल में अगर टाई हो गया तो इफ देयर इज अ टाई इन द शेल, देन आप सबशेल के अंदर जा सकते हैं. ठीक है. चलिए, मूविंग ऑन. राइट, नेक्स्ट. अच्छा, सेम आपके पास एक सवाल आ सकता है इसके बारे में, सल्फर एंड ऑक्सीजन के बारे में, जैसे हमने फ्लोरीन और क्लोरीन को किया ना. सिमिलरली यू कैन गेट अ क्वेश्चन रिगार्डिंग ऑक्सीजन वर्सेस सल्फर. सो आई एम राइटिंग एक्सपेक्टेड एंड द एक्चुअल थिंग, जहां पे आपको सवाल आएगा. और बेसिकली आपको सवाल इस तरह से आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट ऑफ सल्फर, है ना? इट इज, दैट मींस इट इज लेस नेगेटिव देन सल्फर. होना क्या चाहिए था? ऑक्सीजन सिंस इट इज down the group, what happens? Delta Eg decreases, है ना? It becomes less negative. But oxygen का क्या है? It is less negative. Oxygen तो सबसे ऊपर है, सबसे ज्यादा नेगेटिव होना चाहिए. तो इसमें आंसर वही सेम है. That in oxygen, electron is added in 2p, which is small,
leading to इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, है ना। एंड सल्फर में डालेंगे अगर इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू 3p विदाउट सिग्निफिकेंट रिपल्शन, ठीक है। देयरफॉर डेल्टा HEG of oxygen is less negative than sulfur, ठीक है। लिखेंगे इस तरह के आंसर, हाँ या ना बताएं। Sir, only two moving on. cases are there. Oxygen. Yeah. Oxygen and sulfur, and then you have to understand about फ्लोरीन एंड क्लोरीन। फ्लोरीन एंड क्लोरीन वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। फ्लोरीन और क्लोरीन वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट। लेट मी नो वंस यू written down. Done, sir. Martin done. Martin, are you done? Martin is not in the class, it seems. Now, right next, electronegativity. In this, you are going to first of all write the point. What is definition? The tendency of an atom to pull electron in a bond is called electronegativity. Okay. So whenever जैसे ही आपके पास क्या गया, pull electron in a bond, then obviously the electrons are shared, and when the electrons are shared, that is going to be a covalent bond, right? So electronegativity is a concept that is mainly used in covalent molecules which have covalent bond. Now, simple trends for electronegativity is there. Please write. In a period left to right, electronegativity को we denoted by chi. Okay, this is, I mean, जो मोल फ्रैक्शन के लिए chi यूज होता है ना, this one, उसी का ये कैपिटल लेटर, ठीक है। So this is chi, which is large. In a period left to right, chi increases as Z effective increases and size decreases. Next, in a group top to bottom, the chi is going to decrease as Z effective is constant. Z effective लिखने की जरूरत नहीं है, as इसे लिख सकते हैं decreases as size increases, है ना। Because when you are having electrons, when they are in the shared pair, so obviously it is going to be the outermost electron, and when the nucleus is going to attract the outermost electron, so it can attract it more effectively if the size is smaller or if the charge is very high. So when you go left to right in a period, then what is going to happen? Then the Z effective is going to increase and the size is going to decrease. So in both of the cases, the pulling of electron or the attraction of electron becomes easier. Now, important thing is that you have to remember a electronegativity series. So the most electronegative element is fluorine, then oxygen, then nitrogen, followed by chlorine, bromine, iodine, sulfur, carbon, phosphorus, and hydrogen. Okay. Now, this electronegativity series you have to remember, but not in the context of this particular chapter. इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपके लिए दिए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट सिंस वी हैव इंट्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये याद करना जरूरी है। अब याद कैसे करेंगे? तो प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। इसको बोलिएगा फोन। क्या बोलिएगा? फोन। फोन कॉल ब्रो, फोन कॉल ब्रो
इश्क प्यार है। इश्क क्या है? इश्क प्यार है। अब तो सबको याद रहेगा, हाँ या ना? आलिया, मार्टिन, सारा एंड हर्षा, याद रहेगा सबको, हाँ या ना? टेल मी। फोन कॉल ब्रो, इश्क प्यार है। फोन कॉल ब्रो, इश्क प्यार है। Now you are not going to answer any of the question according to this series. Please remember, ठीक है? This series is going to be helpful when we are going to move to the next chapter, chemical bonding. It will be helpful in organic chemistry. आलिया को पता होगा, 12th standard में जो आलिया है, 12th standard पास करके इन्होंने, इनको पता होगा, right आलिया? How electronegativity is helpful? Yes, sir. Yes, sir. कैसे याद करेंगे? फोन कॉल ब्रो, इश्क प्यार है। फोन कॉल ब्रो, इश्क प्यार है। चलिए, ऑल ऑफ यू डन? यस और नो प्लीज टेल मी। Yes, sir. ठीक है, अब हम लोग एक जनरल, जो लास्ट में, अब सारी चीजें हमने 5 प्रॉपर्टीज पढ़ ली, उनको हम लोग यहाँ पे कंक्लूड कर लेते हैं। We are just talking about the trends. इसमें whatever anomaly is there in the trend, we are not going to talk about that here. Trend क्या है उसको देखेंगे, ठीक है? So number 1 is in a period. In a period, left to right. Left to right, what happens? Number 1 we are going to write. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? Z effective, right? पहला पॉइंट, अच्छा इसको थोड़ा सा हम लोग दूसरे इसमें से लिख लेते हैं। चलिए, फर्स्ट पॉइंट है, वैसे 1 2 3 करने में तो आदमी का हालत खराब हो जाएगा, इसको फिर से 1 लिखते हैं, इसको लिखते हैं इस तरह से 1, ठीक है? 1 is Z effective. Z effective increases, सही है? सेकेंड है आपका एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज बताइए क्या होता है? इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है? डिक्रीज। एटॉमिक डिक्रीजेस, ठीक है? थर्ड थिंग जो हमने पढ़ी थी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी। नाउ न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, साइज छोटा, अट्रैक्शन ज्यादा, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफिकल्ट, दैट इज व्हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, है ना? इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल, तो मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, है ना? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इजी, कसमें मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है? इफ यू आर नॉट एबल टू लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, इफ योर आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज हायर, दैट मींस मेटालिक कैरेक्टर इज लेस। नेक्स्ट इज negative electron gain enthalpy. Negative electron gain enthalpy, it is going to do what? It is going to increase because size छोटा, Z effective ज्यादा, nuclear charge ज्यादा, size छोटा, incoming electron will get more attraction, it is going to experience more attraction, that is why more energy will be released, that is why more negative, so negative charge increases, negative electron gain enthalpy increases. Sixth point is, if the negative electron gain enthalpy increases, electron affinity बताता है non metallic character, ठीक है? So non metallic character increases, non metallic character increases. Seventh point is electronegativity. Electronegativity, what happens to electronegativity? Tell me. It increases, है ना? Left to right in a period, electronegativity increases. All of you got this? Yes or no? Please tell me. किसी में किसी को डाउट तो बताएं। बोलो भाई, नो डाउट ना? No, sir. सेकंड है, in a group, top to bottom, ठीक है? अब बताएंगे आप लोग, टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, Z इफेक्टिव क्या रहता है? कांस्टेंट। Z इफेक्टिव इज, अच्छा इनको हम थोड़ा अलग कलर से कर दे तो ज्यादा अच्छा रहता है, आई थिंक।
What happens to Z effective? It is constant. Atomic size बताइए. In a group top to bottom क्या होगा? Atomic size increases. increases. Ionization enthalpy decreases. Size बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान. Metallic character, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान तो metallic character Increases. increases. अगर साइज बड़ा है तो the attraction experienced by incoming electron will be less या more. हाँ लेस रहेगा. हाँ तो डिक्रीज करेगा. नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी क्या करेगा फिर? डिक्रीज करेगा. एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज गोइंग टू write this down. Let me know once you're done.